Reproductive health. Reproductive health is for the class 12th and NEET. Reproductive health हेल्थ की जब हम बात करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन says that any organism who is physically, mentally, and socially fit, we can say it is healthy. Physically, mentally, and socially. यहाँ पर जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि एक बंदा जो है, a person is physically, mentally, and socially fit for the process of reproduction. उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ. कंप्लीट वेल बीइंग, फिजिकली, एनवायरमेंटल, सोशल एंड बिहेवियरल. अगर ये सारी चीजें एक बंदे में है, तो वी कैन से दैट रिप्रोडक्टिवली इट इज फिट फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. It is one of the fundamental characters or processes of every organism in the world to reproduce one's own kind, to conserve the gene pool. हमारा जो this reproduction also has increased the population. In 1951, family planning program was launched, which was later on named as Reproductive and Child Health Care Program. Reproductive and Child Health Care Program. इसमें क्या है कि reproductively person, a male or female, should be fit, and special emphasis was given on the health of child. But there are so many problems. There are many problems. The first problem is lack of awareness. लोगों को पता नहीं है about the process, when it should be married, what is the age of marriage, what are the consequences about the child, about the programs, system. हमें सिस्टम के बारे में पता नहीं है. Government has launched many programs, policies, so that the life of an individual, of a citizen, should be better. Techniques. कुछ couples ऐसे भी होते हैं which are unable to reproduce, or which cannot conceive. The main problem lies with the system. Government, or yeah, there are many techniques, जिनको हम कहते हैं reproductive assisted techniques, by which by the help of these techniques, that the couple which do not conceive, they can conceive. Another is program. हम दो हमारे दो, for the mother, pregnancy program, child care program, immunization program. These are the programs launched by the government of India, and they have they have created havoc, that they have changed all the system of this process. Then, but at the same time, when government launched these schemes, that has caused increase in the population, increase in population, and increase in population caused population explosion. Population explosion. There are many concepts. Population explosion, habitat will be degraded, water will be deteriorated, polluted. Habitat नहीं है, water नहीं है, food resources will be limited. These are the main problems which may be caused by the population explosion. Even we have techniques like STDs, sexually transmitted diseases. One should have information about these diseases like AIDS, gonorrhea, etc. At the same time, illegal abortion. This illegal abortion, that means that one abortion occurs through the natural process, but another is which is being done, that is also that is banned by the government. Now, what are the strategies by which we can control this population at government level? First is awareness.
People should be get aware about the population, about the children, about the schemes, about the programs, and about the large population. Availability of contraceptives. There are many contraceptives, condoms, diaphragm, caps, by which the population can be controlled. लेकिन लोगों को पता नहीं. People don't know what should be done. Media. Yes, media. Mass media plays important role at this point. When the population is to be controlled, there are many agencies which are running these conferences, workshops, etc. should be taken. Another point is menstruation. The periodic cycle, monthly cycle occurs in the females. That's menstruation. But 14th, 15th, and 16th day of the menstrual cycle, 28th day cycle में ये 3 दिन ऐसे हैं जहां पर फर्टिलाइजेशन होती है. जब फर्टिलाइजेशन इन्हीं 3 दिनों में 28 days में होती है, तो there is not any need to use the contraceptives for 28 days. That means for 25 days contraceptives cannot be used. They have no fun. But these are the 3 days of the menstrual cycle when the fertilization, when the zygote is formed. So in दिनों में one has to use the contraceptives. Now there are many techniques जिनको हम कहते हैं assisted reproductive techniques. Assisted reproductive techniques, reproduction, कब, कहाँ, कैसे, contraceptives, awareness, child, mother, pregnancy, parents, etc. care, उनके बारे में हमें ये टेक्निक पता. Assisted reproductive techniques. Couples in which abortion occurs, which cannot conceive, having many problems, here this process comes into play. Keep children, कब, कितने बच्चे रखें. Education is the most important fundamental tool. Even government has kept this reproductive techniques, assisted techniques in the syllabus, in the curriculum. Why? So that the people, a girl, a boy should come to know, should understand its ill and good effects. Sex education has been in the syllabus of 6th, 8th, 10th, 12th, NEET, and higher classes. Mass media. The role of mass media is one of the pivotal roles because mass media, whether it is radio, TV, etc., they have to expose the ill effects, the good effects of these techniques. The age of boy and girl. A girl age should be 18 or above 18. A boy age should be 20 or above. No doubt, in rural areas, or we can say unurbanized areas, poor families, something ऊपर नीचे होता रहता है. लेकिन government has banned completely that a girl should be more above 18 and a boy should be above 21 for the reproduction, for this marriage. Consequences. One of the What are the consequences? Whether family should be short, what family should be long, medicine available, habitat कम होगा, खर्चा कम होगा, education पर क्या खर्चा होगा, disease पर क्या खर्चा होगा. This all comes into the consequence or awareness, we can say. One should know what are the consequences of small family, what are the consequences of large family, and
Now, the another topic is population. जब हम population की बात करते हैं, population means group of species, which live in the same area. लेकिन ये जो population अब बन गई है, statistical study of human population. Usually after 10 years, government used to do census, statistical census, that what is the population of the country, state, district, male number, female number, girl child, below the age, above the age, puberty, young generation and old generation. That is known as census. The first census was done in 1871. 1871 when the government of India has done first census, and after 10 साल के बाद census किया जाता है. 15th census was done in 2011. Today it is 2024. 12-13 साल से census हुआ ही नहीं है, unfortunately. But 15th census जो 2011 में हुआ था, according to that, population is increasing at enormous rate, alarming rate. आप अगर हम population की बात करेंगे, in 2000, in 1900, world population was 2 billion. In 1900, world population was 2 billion. In 2000, world population is 6 billion. And only in 1 year, from 2000 to 2001, 1 billion has increased. 1 billion has increased. In India, UP is the most populated state, whereas Sikkim is the least populated state. And we can say, census के मुताबिक पहले doubling of the population occurs after every 33 years. Double population हो जाती है. लेकिन now this trend has decreased. Now it takes only 30 years to double the population. So here we have seen in today's topic that in reproductive health, what are the issues, what are the consequences of small population, large population, government policies, what are the problems, and population explosion, then strategies, why the why it has increased, why the population is increased, and what are the techniques by which even population can be controlled on one side, and on the other side, if the population has controlled or some couples don't have the childless couples, what are the reproductive assisted techniques. Today our topic is methods of contraceptive. See, we have when the population explosion occurred throughout the world, then the method of contraceptive came into existence, that how the population can be controlled. हमारे पास जो मेथड है, सबसे पहला जो हमारे पास मेथड है, हमारे पास contraceptives जो हम which are used, they should be easily available in the market. उनका जो प्राइस होना चाहिए, that should be less, price should be less, and they should not have any side effect. The contraceptives which are in use, they should not have any side effect. And this contraceptive is a temporary method. If a couple wants after 2, 3, 4, 5 years wants the child, they can again go for the process and no problem. And it has no side effect, contraceptive. But there are different types of contraceptives in the market. पहला जो हमारे पास है, how the population can be controlled. The population can be controlled by various methods. पहला जो हमारे पास है, that is by natural method. Natural method जो है, that is the natural method. उसमें पहला point हमें याद रखना है कि during the process of menstrual cycle, 3 days are most crucial.
14th, 15th, and 16th day, in which the ovulation occurs under the influence of LH luteinizing hormone, and the Graafian follicle comes out from the ovary and it reaches to the fallopian tube. And here it remains for 3 days, 14, 15 and 16 days. ये जो 3 दिन है, 14, 15 और 16, इन दिनों में फर्टिलाइजेशन हो सकती है। और इन दिन अगर हमें if we want to be secure, we don't want to be child, then in these 3 days should be protected. दूसरा हमारे पास है abstain from deposition. The crucial method that after the intercourse the sperm should be thrown out. It is a crucial method, but it is then lactation amenorrhea. After this is a natural method after the parturition, when the child comes out. After the parturition, this the mother gives milk to their child, and during this process there do not occur any menopause. This is a hormonal effect due to prolactin and oxytocin, and that is why these mothers cannot conceive during the process of lactation. These are the natural methods of contraception. Now there are another that is known as, उसका नाम है barrier methods. जब हम barrier method की बात करते हैं, that means barrier is that point, that method that the sperm should not be allowed to meet with the ova, or ova should not allowed to be meet with the sperm, and there should be a barrier. इसमें सबसे पहला हमारे पास है condom. Condom easily available, less price, every, and it these methods, barrier methods, they also do not spread the disease, STDs. Then we have हमारे पास है cervical caps, जिसमें हमारे पास diaphragm आता है. ये cervical caps, they are implanted into the female reproductive system. उसके बाद हमारे पास है IUD, intrauterine devices. These devices, for example, these devices are kept in the female reproductive system. Again, the method. Then we have non-IUD. These are not the devices, these are the chemicals. For example, हमारे पास है copper releasing IUD, intrauterine devices, CUT copper की या copper 7 हमारे पास है. ये क्या करते हैं? When the sperm enters into the female reproductive system, these copper ions, they cause the death. They kill the sperm motor. They make motile to immortal, non-motile. Then we have hormone releasing. We have some devices, hormone releasing device, intrauterine device like LNG20. We have progesterone. ये जो LNG20 है, ये जो progesterone hormones है, ये क्या करते हैं? They cause phagocytosis, engulf. They cause phagocytosis. They increase the phagocytosis in the female reproductive system so that the sperms may be killed. इसके बाद हमारे पास है now we have chemical method. केमिकल मेथड में हम केमिकल इस्तेमाल करते हैं. इसमें हमारे पास है पहला स्पर्मिसिडल. स्पर्मिसिडल में हम इस्तेमाल करते हैं लैक्टिक एसिड. हमारे पास है लैक्टिक एसिड, हमारे पास है KMNO4. ये जो स्प्रे करते हैं लैक्टिक एसिड या KMNO4 का, इससे क्या होता है? The sperm, when the sperm enters into the vagina female system, they get killed, they become non-motile. हमारे पास कुछ पिल्स भी है, पिल्स, टैबलेट्स, जिनको हम कहते हैं हार्मोनल पिल्स. हमारे पास है एक दूसरा कॉम्बिनेशन पिल्स, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को मिला के ये हार्मोनल पिल बनाई जाती है. प्रोजेस्टेरोन ये क्या करते हैं? हमारे पास FSH, follicle stimulating hormone, produced from the anterior pituitary, luteinizing hormone, ovulation hormone, produced from the anterior pituitary. ये क्या करते हैं? They inhabit ये जो हम हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन देते हैं, इससे क्या होगा? ये इनहेबिट करते हैं रिलीज ऑफ FSH एंड LH. इसके बाद हमारे पास है मालाडी. मालाडी एक टैबलेट है जिसका नाम है सहेली भी कहते हैं, लेकिन ये नॉन स्टेरॉयडल. नॉन स्टेरॉयड इसलिए इसको कहते हैं कैटाक्रोमेन भी इसको कहते हैं. इसके बाद हमारा और एक मेथड जिसमें आता है इम्प्लांट्स. इम्प्लांट्स मींस
some these implants are implanted in the female reproductive system for long duration or months and years together. Then we have these methods जो अभी तक हमने देखे हैं वेदर नेचुरल वेरियर केमिकल हार्मोनल इम्प्लांट्स इनको हम कहते हैं दे कैन बी रिवर्सिबल these are the reversible methods यहाँ पर एक चीज हमें याद रखना है रिवर्सिबल मेथड्स मीन्स अगर कपल कभी भी चाहे बचा रखना दे कैन कीप और यहाँ पर और एक चीज है जो कॉन्डम और ये जो बेरियर मेथड्स है बेरियर मेथड का एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट ये है दे प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अब सर्जिकल मेथड में हमारे पास है सर्जिकल मेथड बाय द हेल्प ऑफ सर्जरी सबसे पहले हमें याद रखना है इट इज ए परमानेंट मेथड इफ अगर सर्जिकल मेथड में कल 5 10 साल 20 साल के बाद 15 साल के बाद if the couple wants again the child it's not possible due to it इसमें हमारे पास क्या आ जाता है जो हम देखते हैं टेस्टीज जो दो होते हैं टेस्टीज से जो वासा डिफरेंशियल निकलता है उसको अगर हम कट करेंगे यहाँ से तो स्पर्म्स विल नॉट कम आउट इसको कट करेंगे इस टेक्निक को हम कहते हैं वेसेक्टोमी इट इज वंस फॉर ऑल द परमानेंट मेथड दूसरा है हमारे पास जो ओवरीज दो होते हैं फीमेल्स में वहां से जो फेलोपियन ट्यूब निकलता है उस फेलोपियन ट्यूब को भी कट किया जाता है इट इज इन केस ऑफ फीमेल तो अगेन ओवा बाहर नहीं आएगा हियर वेसेक्टोमी वैसा डिफरेंशिया को हम कट करेंगे इन ट्यूबेक्टोमी फेलोपियन ट्यूब को कट करेंगे इट इज अ परमानेंट मेथड और एक मेथड है जिसको हम कहते हैं रिमूवल ऑफ टेस्टीज इन मेल्स जिसको हम कहते हैं कैस्ट्रेशन रिमूवल ऑफ टेस्टीज कैस्ट्रेशन या इन केस ऑफ फीमेल्स ovarectomy removal of ovary in case of ovarectomy even in some females due to some problem due to ovarian cancer which is at alarming rate and even in Kashmir उनको रिमूव किया जाता है then there is not possibility of the formation of ova or the child ovarectomy tubectomy इसके बाद हमारे पास कुछ टेक्निक्स है बाय विच हमें पता चले whether a baby is male or female पहला या क्या उनको कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है लाइक फिनाइल कीटोन्यूरिया लाइक एल्केप्टोन्यूरिया या उसमें हमारे पास और एक चीज है कि क्या इनको कोई डाउन सिंड्रोम है टर्नर सिंड्रोम है या कैल्निफेटर इसके लिए पहले बनाई थी ये टेक्निक जो हम पढ़ने जा रहे हैं लेकिन यहाँ पर एक मसला है इन टेक्निक्स को मिसयूज किया गया हमारे पास एक टेक्निक है जिसका नाम है एमनियोसेंटेसिस एमनियोसेंटेसिस वो टेक्निक है जो हमारे पास जो यूट्रस फीटस के ऊपर जो एमनियन होता है उस एमनियन में एमनियोटिक फ्लूइड है जिस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जिस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर फीटस होता है यहाँ से हम सीरीज से लेके फ्लूइड बाहर निकालते हैं जब ये फ्लूइड बाहर निकालते हैं यहाँ से फ्लूइड तो वो जो सेल्स है उन सेल्स को कल्चर किया जाता है कल्चर करने के बाद कम से कम ये 15 ml तक होना चाहिए कल्चर करने के बाद जो हमने एमनियन से सेल्स निकाले फ्लूइड निकाला उसमें फीटल सेल्स है उन सेल्स को हमने कल्चर किया और यूजुअली होना चाहिए 16 वीक्स का अब हम ये कर सकते हैं when the fetus in mother's womb is around at the age of 16 weeks तो उस सेल्स को हम रीड करते हैं एसेस करते हैं क्या किसके लिए जो पहले निकाला था whether it is मेटाकैरियोटाइप का कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट मत है मेटाबॉलिक डिफेक्ट मत है या जेनेटिक डिफेक्ट मत बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है डॉक्टर्स people public they use it to diagnose whether it is male or female and that has been totally banned क्योंकि अगर हम पॉपुलेशन देखेंगे
1000 males have 934 females. That is a big problem. Now we have another technique that is known as choriosynthesis. कोरियोसिंथेसिस मीन्स जब हम कोरियान से निकालेंगे एमनियोसिंथेसिस में हमने एमनियन से निकाला कोरियोसिंथेसिस इज डन बिटवीन 8 to 12th वीक किया जाता है 8th से 12th वीक तक किया जाता है कोरियोसिंथेसिस कोरियान कोरियान जो लेयर है एमनियन के बाद कोरियान वहां से फ्लूइड निकाला जाता है सिरिंज से और इसको हम कहते हैं कोरियोसिंथेसिस अगेन सेम टू चेक whether it is metabolically active, whether the child fetus has metabolic disorder or genetic disorder like Klinefelter syndrome, Turner syndrome, or Down syndrome. But it should not be used beyond the limits. Then we have another technique that is known as non-invasive technique. Non-invasive technique is done. Non-invasive technique किया जाता है to check the fetal condition. क्या बच्चा ठीक है कि नहीं? It is also done by US ultrasound imaging. Ultrasound imaging. तो इसमें नॉन इन्वेसिव टेक्निक में हम देखते हैं क्या बच्चे की कंडीशन फीटस की कंडीशन ठीक है कि नहीं और एक कंडीशन है हमारे पास टेक्निक है जिसको हम कहते हैं फीटोस्कोपी फीटोस्कोपी मीन्स needle and need type of needles inserted through the vagina and to check the fetus क्या fetus ठीक है या नहीं है but it is done through the vagina and needle is inserted which has it is different instruments to check whether it is but it only checks the external character whether arms head legs and other organs are fine or not with this topic methods of contraceptive completes in which we have seen contraceptives natural method barrier method chemical methods hormonal methods implants these are reversible methods and then we have irreversible method and surgical method जहाँ पर हमने देखा वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी और कैस्ट्रेशन एंड ओवरेक्टोमी उसके बाद हमने टेक्निकल देखी एमनियोसेंटेसिस एमनियन से कलेक्ट करके कोरियोसेंटेसिस और नॉन इन्वेसिव टेक्निक और फीटोस्कोपी with this topic completes sexually transmitted disease जिनको हम commonly STDs कहते हैं during the process of intercourse or reproduction we can say during the process of intercourse many diseases from male to female or female to male they can pass so that is why this sexual transmitted disease has been kept in your syllabus हमारे पास सबसे पहली जो डिजीज है जिसका नाम है क्लेमाइडियोसिस क्लेमाइडियोसिस एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिस बैक्टीरिया का नाम है क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस इसमें इससे हमें बचने के लिए क्या क्या हमें चाहिए हम कंट्रासेप्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स लाइक टेट्रासाइक्लिन इरेथ्रोमाइसिन इनको हम कहते हैं साइलेंट किलर्स क्योंकि जब तक ये डिजीज बहुत आगे चली जाती है हमें पता नहीं होता इसमें क्या क्या होता है painful urination a pain burning pain occurs in males pus comes out from the private parts and this urine or with a thick discharge just like pus in case of female the female reproductive system cervix uterus fallopian tube that shows inflammation and even in case of in females it leads to sterility gonorrhea gonorrhea is another disease STD caused by Neisseria gonorrhea it is a gram-negative diplococcus bacteria inflammation occurs to the tract whether in males yeah females maybe or arthritis it leads to the problem in bones and
sterility. That the male and female, they are unable to reproduce, they are unable to produce sperms and ova. If they will produce, they are non-motile. This particularly affects females. और इसको और एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम। ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम को और एक नाम है गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया। इसमें क्या होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी है, जो न्यूबॉर्न बेबी है उसमें यूजुअली आईज में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है हमारे पास साइफिल्स। साइफिल्स एक एसटीडी है जो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिस बैक्टीरिया का नाम है ट्रिपोनिमा पैलिडियम। ट्रिपोनिमा पैलिडियम एक बैक्टीरिया है, और इससे क्या होता है, दिस बैक्टीरिया इवन इट कैन पास फ्रॉम मेल टू sorry, even it can pass from mother to fetus through placenta. It has three stages. This Treponema pallidum, it has different stages. One, it can cross placenta. Now we have another disease that is known as hepatitis B. Hepatitis B is a virus caused disease caused by hepatitis virus B virus जिसको हम कहते हैं, and it is more dangerous than AIDS virus, hepatitis B virus। इसमें क्या होता है, इस वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन इज अवेलेबल टू प्रिवेंट फ्रॉम दिस डिजीज। एक टेस्ट आता है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन एंटीजन टेस्ट, बाय विच इट कैन बी चेक, जिसको आजकल दूसरा नाम दिया गया है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट। इसमें क्या होता है, ब्लड ये यूजुअली स्प्रेड होती है बाय एसटीडी सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसमें क्या होता है, मोस्ट इफेक्टेड ऑर्गन्स लाइक लिवर, लिवर जिसमें हो जाता है, जिसको हम लिवर सिरोसिस कहते हैं, लिवर लॉस्ट विद टाइम इट्स फंक्शन। जॉन्डिस, bilirubin and biliverdin जो which has to pass to the digestive tract is not passed but remains in the blood and causes jaundice. Hepatitis. Now we have another disease that is known as genital herpes or genital warts। इसको हम टाइप 2 herpes भी कहते हैं, टाइप 2 herpes भी कहते हैं। इसमें vaginal candidiasis और फंगस कैंडिडेरा, वेजनल वेजनल कैंडिडेशन एक फंगस है जिसको हम कैंडिडा एल्बिकेनस भी कहते हैं, और ये पार्चुलेशन के वक्त जो when the fetus comes out from the mother at that very time when the blood transfuses mixes, तो ये बाहर आ जाता है, जिसको genital warts, the बस्त जिनको हम कहते हैं, ब्लिस्टर्स आर फॉर्मड इन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है। और हमारे पास यहाँ पर है ट्राइकोमोनास वैजिनेलिस, और एक डिजीज है ट्राइकोमोनास वैजिनेलिस जो है, ये एक प्रोटोजुआ है, एक प्रोटोजुआ है। इस प्रोटोजुआ, ये जो प्रोटोजुआ है, ये जो प्रोटोजुआ है यूनिसेलुलर यूकेरियोट है vaginalis, it remains in female reproductive system and spreads by these STDs, sexual intercourse, and even in females vaginal discharge occurs, pain in reproductive system and discharge fluid comes out from the female reproductive system। एक जगह यहाँ पर प्लीज इसको देखिएगा, जो हेपेटाइटिस वायरस बी है, हेपेटाइटिस वायरस बी, it has three consequences, primary, secondary and tertiary consequences। ये जो है क्या क्या होता है इसमें, प्राइमरी में genitalia, lips and fingers, sores, chancers, blisters are formed। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी प्रॉब्लम हो सकती है।
प्राइमरी में क्या होता है? जेनेटेरिया, वो वर्म, बस, inflammation occurs, lips as well as in fingers, then sores, cancers are found. In secondary infection, loss of appetite, weight loss, then the physically, physique becomes very weak. In tertiary, mental disorder occurs. Then patches and gums. Sorry. यहाँ पर एक जगह हमने गलत देखा था, वो यही पॉइंट था. हाँ? With these, we have then we have lost disease that is known as AIDS. AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, is a disease. AIDS, which was discovered in 1981 in America and in India in 1885. AIDS is caused by a virus that is known as HIV, human immune virus. This virus, this virus lives in our immune system. It lives inside the T helper cells. This virus decreases or infects our immune system. Hence, it is known as immune syndrome, acquired immune deficiency syndrome. It spread occurs by the HIV virus, and it causes our immune system deficient to fight with the infection. How it spreads? It spreads by sexual intercourse, by blood transfer, by razor, and by syringes, etc. Multiple intercourse with many females or with many males. That is the main reason. This we have the drugs, but not completely. It cannot be controlled completely. So the drugs are not available. With this, these are the main diseases of sexually transmitted disease (STD). इसमें chlamydosis, AIDS, chlamydosis, gonorrhea, syphilis, hepatitis B, genital herpes warts, and trichomonas vaginalis. Assisted reproductive technology, इसको हम ART भी कहते हैं. Mothers or females or males which have the problem either in male or in female, whether in reproductive organ or sperm or ova or less sperms are producers, non-motile sperms are producers, ova are not functional, or even problem in erection or etc. And or in some cases we have seen that the female produces antibodies against the sperm. So this zygote is not formed, and in many cases, if zygote is formed, abortion occurs, or we can say a female cannot conceive, or after some time abortion occurs. There are many multiple problems, and in order to solve this problem, we have assisted reproductive technology. Childless couples, oligospermy, less sperm, non-motile sperm, नंबर कम है या और कुछ है, या इवन इन सम फीमेल्स वैसे फेलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है, तो उस वक्त हम कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला जो है टेस्ट ट्यूब बेबी. टेस्ट ट्यूब बेबी सबसे पहले डॉक्टर पैट्रिक्स 1959 में इन्होंने किया था, लेकिन वो जो एम्ब्रियो इन्होंने किया था दैट सर्वाइव ओनली फॉर 29 डेज ही वो सर्वाइव तो खत्म हुआ. वर्ल्ड की जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है दैट इज वो डॉक्टर स्टेफी एंड डॉक्टर और एडवर्ड ने बनाई थी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी. और लुइस जो मदर जिस मदर ने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोड्यूस की थी उसका नाम था लुइस जो ब्राउन. अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी में? ova is taken from the mother, and ova is taken from the mother as well as the sperm is taken from the father, or we can say donor, and then they are fused in a fallopian, in a test tube that is known as test tube baby. Why? इस ये इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर माँ को कोई प्रॉब्लम है, अगर फादर को कोई प्रॉब्लम है, अगर फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम है स्पर्म, तो इनको टेस्ट ट्यूब के बाद हम इसको वापस कर सकते हैं. इसको हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी. इसमें हमारे पास सबसे पहला जो है जिप्ड
अगर बाहर हमने जाइगोट बनाया, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब, जिप्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब में हम देखते हैं 8 सेल स्टेज में हम जिप्ट करते हैं, जाइगोट होना चाहिए 8 सेल स्टेज। अगर आफ्टर, इफ इट इज आफ्टर 8 सेल स्टेज, 8 सेल के बाद होगा, तो हम इसको कहते हैं IUT, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर। इफ इट इज आफ्टर 8 सेल स्टेज, 2 पॉइंट्स है, जिफ्ट, zygote intrafallopian tube, 8 cell stage. If it is after 8 cell stage, then we can say it is uh, RUT, intrauterine transfer. इसके बाद हमारे पास है गिफ्ट। गिफ्ट मीन्स ओनली गेमीट विद इधर स्पर्म और ओवा, इनकी या तो स्पर्म मेल में प्रॉब्लम है या ओवा फीमेल में प्रॉब्लम है। इसमें हम क्या करते हैं, ओवा फीमेल से लिया जाता है, प्रोड्यूस वो मदर विच प्रोड्यूसेस स्पर्म एंटीबॉडीज, जाइगोट बनने नहीं देती है, तो उससे ओवा लिया जाता है, मदर से ओवा लिया जाता है, और फादर या डोनर से स्पर्म लिया जाता है। तो उस वक्त हम इसको फ्यूज करते हैं, उसको कहते हैं गिफ्ट गेमीट ऑनली। और एक है हमारे पास जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सेमन इज कलेक्टेड, ये मेल्स में किया जाता है, उन मेल्स में जहां पर ऑलिगोस्पर्मी है, स्पर्म काउंट कम है, इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल स्पर्म इंसेमिनेशन भी, क्योंकि हम मेल जिनका स्पर्म इधर नॉन मोटाइल है या कम नंबर है, अगर नॉन मोटाइल तो डोनर से लेते हैं, अगर कम है तो उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। इसको अब और एक नाम दिया जाता है ICSI, इंट्रासेल्यूलर स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासेल्यूलर स्पर्म इंजेक्शन में क्या होता है, स्पर्म इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द ओवा, अगर डायरेक्टली स्पर्म इंजेक्टेड इन ओवा में, तो उसको हम कहते हैं इंट्रासेल्यूलर स्पर्म इंजेक्शन। विद दिस चैप्टर ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंप्लीट।